Okay. So good morning to all of you. Today we will discuss about the memory management. In memory management, we will discuss about the paging. In the last class, we have discussed about the contiguous memory allocation scheme. And in this scheme, we see how we can allocate memory to a process. If we want to allocate a memory in contiguous allocation, we used a mechanism that is called the best fit, worst fit, or first fit allocation technique. With the help of these allocation technique, we allocate memory to a process. But the problem is that we suffer from the fragmentation problem. Whatever it is the internal fragmentation or external fragmentation. If a process occupy or allotted memory than the required memory, then we face internal fragmentation problem. And if free space is in non-continuous form and a process want execute, memory space is available but it is in non-continuous form. That means this types of fragmentations of memory is known as the external fragmentation. So I think fragmentation और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ये आपको क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, व्हाट इज द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड बेस्ट मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स इन कंटिन्यूअस वे. इन कंटिन्यूअस वे में बेस्ट मेमोरी मैनेजमेंट एलोकेशन टेक्निक्स first fit, best fit, or worst fit. So the best fit is the best memory allocation technique for the contiguous memory allocation because it is provide or it support to the less internal fragmentation. Worst fit is the poor or lowest memory allocation technique if we want to choose. अगर हमें choose करना है तो वर्स्ट फिट सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाली एलोकेशन टेक्निक है विच इज प्रोवाइड द लार्जेस्ट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. So best fit is the first technique for contiguous memory allocation. The next is the first fit and the next worst fit. So this is the लेवल कि अगर हमें मेमोरी मैनेजमेंट एलोकेशन टेक्निक यूज करना है तो किस तरीके से हम करेंगे. बट ऑल आर फॉर द contiguous memory allocation technique. Now come to the another. If we want to discontinue, मतलब अगर अब हमें कंटिन्यू नहीं रखना है, non continuous memory allocation mechanism concept if we want to use, then what the paging come in picture. अगर आप मेमोरी एलोकेशन नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म में रखना चाहते हैं तो आपका क्या होगा, पेजिंग का कॉन्सेप्ट अब आपके सामने आएगा. व्हाट इज द पेज? बेसिकली पेजिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट एलिमिनेट द नीड फॉर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन ऑफ फिजिकल मेमोरी. पेजिंग is a memory management scheme that eliminate the need for continuous memory allocation of physical memory. मतलब जो continuous allocation जो होता है physical memory का, उसकी need को eliminate करने के लिए हमें paging लेके आए. The scheme permit the physical address space of a process to be non-contiguous. मतलब जो हमारा physical address space रहेगा memory का, it will be in non-contiguous form. The logical address or virtual address is represented in bit.
one more thing. ये 4 definition है. These are the 4 definition, and we should remember how we can represent the logical address, how we can represent the virtual address, how we can represent logical virtual address space or virtual address space, how we can represent the physical address, and how we can represent the physical address space. Logical address or virtual address represent in bits an address generated by the CPU. Logical address space or virtual address space represented in word or byte. The set of all logical address generated by a program. Look at this. The set of all logical address generated by a program, where logical address or virtual address, an address generated by the CPU. Logical address and virtual address is represented in bits, where logical address space or virtual address space is represented in word or byte. So that is the difference. Now come for the physical address represented in bits. An address actually available on memory unit. यहाँ पर क्या है? Physical address, where we will see the physical address. We will see the physical address in memory unit, and it is represented in bits. Physical address space represented in word or byte, the same as logical address or virtual address space. Physical address space is also represented in word or byte. The set of all physical address corresponding to the logical address. The set of all physical address corresponding to a logical address. मतलब जितने हमें लॉजिकल एड्रेस स्पेस मिलेंगे उसके करस्पॉन्डिंगली वी विल प्रोड्यूस अ फिजिकल एड्रेस. तो द नेक्स्ट कि अब आपका पेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बिकॉज ऑफ दिस इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड द न्यूमेरिकल पोर्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गेट नेट और सेलेक्ट पर्पस. एड्रेस जनरेटेड by CPU is divided into address generated by CPU. Address generated by CPU is divided into page number and the page offset. Address generated by CPU, दो पेज उसमें डिवाइड होगा. One is the page number and another is the page offset. Is that clear? Page number and page offset. Just minute. Okay, so look at this. Address generated by CPU, जो address generate होगा हमारा CPU का, it will divide it in two part. One is the page number and another is the page offset. ये पेज नंबर और पेज ऑफसेट मिलके आपको मेमोरी का एड्रेस प्रोड्यूस करेंगे. एक्चुअल मेमोरी का एड्रेस जो रहेगा वो इन्हीं दोनों चीजों से मिलकर बना होगा. पेज नंबर मीन्स यूज्ड एंड इंडेक्स इनटू द पेज टेबल. पेज नंबर आपको कहां से मिलेगा? एक पेज टेबल होगी, देन यू विल फाइंड द पेज नंबर फ्रॉम द पेज टेबल व्हिच कंटेन द बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी. जो फिजिकल मेमोरी में हमारा पेज जाने वाला है उसका बेस एड्रेस पेज टेबल में रहेगा और वहां से आपको एक पेज नंबर मिलेगा. इस पेज नंबर के साथ एक पेज ऑफसेट अटैच होगा. Page offset will attach along with the page number to become a actual memory address, and the page offset is what combine the base address to define the physical memory address that is sent to the memory unit. ये जो memory unit रहेगी आपको उसको जो send करेंगे हम physical memory address, उसमें page number and the page offset decide होगा. Look at this. P and D. P is the page number, D is the offset, M minus N is the page number, and N is the offset. For given logical address space 2 to the power M and the page size is 2 to the power N. ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. The formulae should we remember 2 to the power M is the logical address space and the page size 2 to the power N.
ये अभी मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं, देन वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला. Now come to the this page number and page offset. We have already seen the page number of bits required to represent the page in the logical address space or the page number. This is the definition of the page number. The number of bits required to represent the page in logical address space or page number. And the page offset is number of bits required to represent particular word in a page or page size. मतलब वर्ड में हम एक पेज में नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट पर्टिकुलर वर्ड, कितने वर्ड हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उनकी जो बिट्स हैं एक पेज में, और पेज साइज ऑफ द लॉजिकल एड्रेस स्पेस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस का जो पेज साइज रहेगा, या फिर वर्ड नंबर ऑफ ए पेज, एक पेज में कितने वर्ड हैं, और ऑफ पेज ऑफसेट. मतलब पेज ऑफसेट को फाइंड आउट करना है तो आपके पास ये डेफिनेशन है. पेज नंबर को फाइंड आउट करना है तो दिस इज द डेफिनेशन टू फाइंड द पेज नंबर. तो ये डेफिनेशन हमें याद रखने की कि पेज नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द पेज इन लॉजिकल एड्रेस. And what is the page offset? Number of bits required to represent the particular word in a page. That is the page offset. पेज नंबर के करस्पॉन्डिंगली आपको एक फ्रेम नंबर मिलेगा, और इस पेज ऑफसेट के करस्पॉन्डिंगली आपको एक फ्रेम ऑफसेट मिलेगा. लुक एट दिस टू डिफरेंट वर्ड कम, वन इज द फ्रेम नंबर एंड द फ्रेम ऑफसेट. द पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट जनरेटेड बाय द CPU, where the actual address generated by the memory, that is the frame number and the frame offset. ये आपका एक्चुअल है, ये CPU दे रहा है, और जो फिजिकल एड्रेस है वो फ्रेम नंबर एंड फ्रेम ऑफसेट. तो पेज नंबर के करस्पॉन्डिंगली आपको एक फ्रेम नंबर मिलेगा, और पेज ऑफसेट के करस्पॉन्डिंगली आपको फ्रेम ऑफसेट मिलेगा. Once you get the frame number corresponding to the page number and frame offset corresponding to the page offset, then you will combine the frame number and frame offset to get actual memory address. Look at this. किस तरीके से? See this diagram. This is the implementation diagram. How we can implement a paging concept or page table concept or paging address or logical address into physical address. CPU generated logical address which is divided into two parts. One is the page number and another is the offset. We find the frame number corresponding to the page number. This frame number will combine with the offset. Look at this. We will say this is the frame offset which is corresponding to the page offset. तो पेज ऑफसेट सीधा उठा, यहाँ पर आया, इस पेज नंबर के करस्पॉन्डिंगली मेरे को फ्रेम मिला, फ्रेम नंबर उठा, और आफ्टर दिस वी विल सी द एक्चुअल मेमोरी. तो ये आपके किसी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट होने की आपका एक मैकेनिज्म है जो कि नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन कहलाता है, पेजिंग. कि अब जो आपको यहाँ से एक एड्रेस मिल रहा है इस फिजिकल मेमोरी से, इस मेमोरी में वो पेज कहीं पर भी हो सकता है, वो फ्रेम नंबर कहीं पर भी हो सकता है. मतलब फॉर एग्जांपल कि अभी आपको यहाँ पर है पेज फ्रेम नंबर, फिर आपको एक फ्रेम नंबर यहाँ मिल गया, एक फ्रेम नंबर यहाँ मिल गया, मतलब आपको 3 फ्रेम नंबर मिले एक प्रोसेस के लिए जो कि अलग अलग लोकेशन पे हैं. तो मतलब they are not in continuous form, they are in non-continuous form, but all are continuous through the linking. जैसे कि लिंक लिस्ट में आपका होता है, आप लोग लिंक लिस्ट पढ़ के आए हो सब लोग, लिंक लिस्ट भी नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करती है, बट इन अ लीनियर वे. द सेम कॉन्सेप्ट जो लिंक लिस्ट का है, वही एक कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में यहाँ लेके आओ कि यहाँ पर पेज जो है वो कैसे हो जाएंगे, एक एक नोड को रिप्रेजेंट करेंगे.
और हर प्रोसेस के लिए हमें नंबर ऑफ पेज मिलेंगे। वो नंबर ऑफ पेज कहीं पर भी हो सकते हैं मेमोरी में, एक्चुअल यहाँ पर। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे पेज आपस में लिंक करेंगे और उस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, उस प्रोसेस के टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो दिस इज अ बेसिक पेजिंग हार्डवेयर स्कीम टू इम्प्लीमेंट टू गेट द एक्चुअल मेमोरी एड्रेस। Now come to this page number, page offset, frame number, frame offset. Look at this. This is the page number, page offset, frame number, frame offset. पेज नंबर के करस्पॉन्डिंगली फ्रेम नंबर मिलेगा। ये पेजेस नंबर आपको कहाँ मिलेंगे? वी विल फाइंड द पेज नंबर इन ए पेज टेबल। के पेज टेबल में यहाँ पर हमारे पास नंबरिंग होगी, है ना। इस नंबरिंग के करस्पॉन्डिंगली हमें एक फ्रेम नंबर मिलेगा। वो फ्रेम नंबर हमारे ऑफसेट के साथ कनेक्ट होगा, देन वी विल सी एक्चुअल। तो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पेज। अब लुक एट दिस कि ये फिजिकल मेमोरी आपकी नंबर ऑफ फ्रेम्स में डिवाइड है। लुक एट दिस, द इंपॉर्टेंट थिंग कि जो फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फ्रेम और डिवाइडेड इनटू अ फिक्स साइज ऑफ द ब्लॉक। Physical memory is divided into fixed size of block, that is called the frame. जो ब्लॉक है फिक्स्ड साइज के रहेंगे। मतलब अगर आपने बोला फिजिकल मेमोरी के जो फ्रेम है उनकी साइज 1 KB की है, तो अब आपके 4 GB की रैम है और फिजिकल मेमोरी को आपने 1 KB के फ्रेम में डिवाइड किया है। तो अब आप समझ लीजिए कि नंबर ऑफ आपके फ्रेम कितने होने वाले हैं, कितने फ्रेम में ये डिवाइड होगी। 4 GB है, 1 KB का एक फ्रेम है, 4 GB का हमारा टोटल स्पेस है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम कितने होंगे आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेट करने के लिए, है ना। अब जब आपके पास इसी तरीके से आपके पेज नंबर प्रोड्यूस होंगे, जस्ट लाइक पेज नंबर विल ऑल्सो ऑफ फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक। पेज नंबर को हमको जो पेज हमारे होंगे वो भी फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक होंगे। जिस साइज का फ्रेम होगा उसी साइज का हमारा पेज होगा। तो इट इज क्लियर, यहाँ तक आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट। पेज नंबर क्या होते हैं, पेज ऑफसेट क्या होते हैं, फ्रेम नंबर क्या होते हैं, फ्रेम ऑफसेट क्या होते हैं, एंड हाउ वी विल रिप्रेजेंट द पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट इन करस्पॉन्डिंग टू द फ्रेम नंबर एंड फ्रेम ऑफसेट एंड टू गेट द एक्चुअल मेमोरी। यहाँ तक अब किसी को कोई डाउट है, then you can ask. Have you any doubt? Okay, let us see. This is an example कि जो अब आपको बताया गया था। If a logical address is 31 bit, then logical address space 2 to the power 31. See here, logical address space 2 to the power m and page size is 2 to the power n. M minus n is the page number and d is the offset. आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ये फॉर्मूला याद रहेगा, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। So look at this. If a logical address 31 bit, then the logical address is 2 to the power 31 word is equal to 2G word, or 1G is equal to 2 to the power 30. Look at this. 1G is equal to 2 to the power 30. 1M is equal to 2 to the power 20. ये आपको वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, 1G and 1M, बिकॉज ऑफ कि आपको सम सॉर्ट ऑफ, जैसे ये बोल दिया ना 2 to the power 2G वर्ड आपको दे दिया, तो अब आपको लॉजिकल एड्रेस स्पेस फाइंड आउट करने बोला कि नाउ वी हैव अ 2G वर्ड, देन व्हाट विल बी द लॉजिकल एड्रेस स्पेस, देन यू कैन से 2 to the power 30, 2 to the power 30। अगर 2G लिखा है तो 2 to the power 30 you can say this is the logical address space, and the logical address bit कितनी हो जाएंगी, you can say 30। तो
आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है तो आपको याद रखने रहेंगे ये सारे। नाउ कम टू द इफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज इक्वल टू 128m is equal to 2 to the power 7 multiplied by 2 to the power 20 words. Look at this. If logical address space is 128m word, this is the logical address in 31 bit. This is the logical address space 128 bit m word. Then is equal to 2 to the power 7 multiplied by 2 to the power 20 word. Then the logical address is equal to log 2 to the power 27 is equal to 27 bit. अब अगर m में अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है m वर्ड, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू बिट। जो बिट में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो दिस इज द प्रोसीजर टू कन्वर्ट लॉजिकल एड्रेस स्पेस व्हिच इज कमिंग इनटू वर्ड एंड फाइनली वी गेट 27 बिट्स। तो कन्वर्ट कैसे किया है, 128m टू द पावर 7 अगर आप लगाएंगे तो 128 हो रहा है। इस m को कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखा है 1m इज इक्वल टू द पावर 20, ठीक है। तो 2 to the power 20 आपने लिख दिया यहाँ पर, इस m को जो लिखा था m टू द पावर 20 वर्ड। देन द लॉजिकल एड्रेस कन्वर्ट करना इस वर्ड को बिट में, तो दिस इज द फॉर्मूला। This is what? This is the formula. Log 2 to the power 27 इस फॉर्मूले में रखोगे, then you will get the bit. कि लॉजिकल एड्रेस कितने बिट का होना चाहिए। This is the formula to convert logical address space into logical address. Now see, if physical address is equal to 22 bit, look at this, physical address is equal to 22 bit, then the physical address space 2 to the power 22 words is equal to 4m. Look at this, this is the physical address 22 bit का है। physical address space कितना हुआ, 2 to the power 22 वर्ड का हुआ, is equal to 4m वर्ड। अब 4m वर्ड मतलब 4 into 2 to the power 22, तो ये आपका कन्वर्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड द 2 to the power 20 वर्ड। जो वर्ड में आपने फिजिकल एड्रेस स्पेस को कैसा किया, 2 to the power 22, और 2 to the power 22 वर्ड मतलब 4 into 2 to the power 22। क्या आप इसको निकालिए, किस तरीके से निकालेंगे, ये वर्ड है, देन आपको निकालना है, तो आप यू विल गेट 4m वर्ड। 4m मतलब मैम की जगह आप 2 to the power 20 रख सकते हैं, तो 4 into 2 to the power 20 वर्ड। तो फिजिकल एड्रेस, देन द फिजिकल एड्रेस स्पेस। नाउ कम टू दिस, इफ फिजिकल एड्रेस स्पेस इज इक्वल टू 16m वर्ड, m वर्ड में दिया फिजिकल एड्रेस स्पेस, नाउ कन्वर्ट फिजिकल एड्रेस 2 to the power 4, इस 16 को कन्वर्ट करने के लिए 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय इस m को कन्वर्ट करने के लिए 2 to the power 20 वर्ड, देन द फिजिकल एड्रेस log 2 to the power 24, then we will get the 24 bit. So this is an example to convert the logical address into logical address. If we get the logical address space, then we can convert it into the logical address. If we have the physical address, then we can convert into the physical address space. And if we have physical address space, then we can convert this into the physical address. But before this, we should remember this formula PD m minus n and logical address space 2 to the power m, and the page size is 2 to the power n. Mn is the bit. M and n are what? This is the bit. And how we can convert m or g? So 1g is equal to 2 to the power 30, 1m is equal to 2 to the power 20. And if we want to convert m word, then we need to
2 to the power m, and if we want to convert a physical address space into the physical address, then we need 2 to the power 2 to the power n. तो अगर हम हमें 2 to the power m और n कन्वर्ट करना है तो we will see the factor कि अब इनके फैक्टर देखिए कितने की पावर पे आपका ये रिजल्ट मिल जाएगा। 2 to the power कितनी लगाए कि 128 मिल जाए, तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन वी विल सी, हम आसानी से फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। We have already told you the page size is equal to the frame size. Page size, logical address space is also split into the fixed size block, that is called the page. I have already told you the same is the physical address space is divided into number of fixed size block, that is called the frame. So both are, I have already told, the physical memory is divided into fixed size of block, that is the frame, and the CPU address generated, that is called the fixed size of block, and it is called the pages. And the frame is produced by the memory management unit, which is the hardware device. Is that clear? And the mapping from virtual to physical address is done by the memory management unit, which is the hardware device, and this mapping is known as the paging technique. So this is your paging concept. Okay, thank you all. Thank you all, and we will again join in the next class. So thank you for today's class. Thank you very much.